Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Surajji. Good morning, Sandeep. Did you capture the move? What move? मैं Thursday से trade ही नहीं किया. Good morning, Sudesh. Let's start with the analysis, guys. I'm not going to take long time because Thursday से start करके आज का दिन का analysis पे आना है. ठीक है? So starting point will be fifth post completion of supply 100%. What are the major scenarios you will be working at the current states? Right? So this will be like a back testing because दो दिन already हो चुका है. So I'll not explain in deep, but carry forward में जो movement है उसी के साथ हम बने रहेंगे, ठीक है? So post completion first rejection point यहाँ पे develop हुई थी, तो that will be the action point because back testing के format में आ चुका है, right? So in this point S2B1 के साथ first allocation 100% rejection 100% rejection से साथ continuity फिर से S2B1 formation break and continue 150% का rejection form हुआ था यहाँ पे, correct? So with 150% rejection formation, what is the next step that we'll be working on? So the next step is allocation of break and continue. Allocation of break and continue. First plotting will be taken from 100% to 150 as a surplus allocation. With the surplus allocation point, carry forwarding the movement to the next step. Right? So with this break and continue, with break and continue, 100% जो break होता है, we double it. We allocate it to 150 and 200 of surplus. Completion of the point 1, which was taken under the consideration of the blank out. With this point 1, point 2, point 3, सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ही आता है. सो 200% ब्रेक एंड कंटिन्यू आया तो हम सेकेंड सर्विंग लेंगे यहाँ पे दिस वन. सेकेंड सर्विंग का अलोकेटिंग पॉइंट से रीमैप द स्ट्रक्चर फ्रॉम द बॉटम बिकॉज हाई वीक रेंज है तो पूरा वीक हम पकड़ने वाले हैं. राइट? ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक एंड कंटिन्यू में 200% का रिजेक्शन. With 200% rejection, formation of the allocation is taken in perspective of the movement which is being allotted in pursuance with the first come first serve movement. Lookout plan of action will be taken under the consideration of this demand as first come first serve. Because plotting availability नहीं थी हमारे पास इस जोन पे तो यही एक्शन को हम रीडिप्लॉय करेंगे. क्या हम मैपिंग यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे या यहाँ से? डेफिनेटली फर्स्ट मैपिंग यहाँ पे ही होगा, राइट? बिकॉज ये मूवमेंट देख के आप ऑलरेडी ये मैप कर चुके होंगे. बट इन कंक्लूजन अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पे एक इंटैक्ट पॉइंट था, करेक्ट? सो ये इंटैक्ट पॉइंट का डाइल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट अलोकेशन पॉइंट आउट होता है. सो अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये हमारा सप्लाई थी, करेक्ट? सो ये सप्लाई का मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद ही हम अलॉट करेंगे डिमांड. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अलोकेशन allocating point कौन सा होगा? ये वाला. Right? With this, there is no break and continue. So nor there is a retracement with retracement followed. अगर नोटिस कर रहे हो सेकेंड इंटैक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था. इंटैक्ट कंप्लीट होने के बाद विद द वॉल्यूम द मेजर बेरिश मोमेंट का इंटैक्ट के साथ फॉलो थ्रू में डेवलपमेंट दिखने को मिली थी. राइट? नाउ दिस प्लेज द रोल फ्रॉम दिस पॉइंट.
अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन से जैसे ही रोल प्ले आउट होने हुआ स्टार्ट मतलब प्ले आउट होना स्टार्ट हुआ, what is the first major thing that you will be looking for? Execution points. Execution points is always taken in consideration of the movement of observations, right? यहाँ पे M1 फॉर्म हुआ है, M1 फॉर्म होने के बाद ऑन द ब्रेक S2B1 के साथ यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन देख सकते हो, कैरी फॉरवर्ड पे 150 एंड 200% की टारगेट्स, right? So with this played a role of 150 over here. 150 होने के बाद 200, right? So with this 200 point of action, what is the one major thing that needs to be taken under the consideration at this point? वो एक चीज क्या है यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं? हम्म, एनीवन? कोई भी बता सकता है? गुड मॉर्निंग रितेश, गुड मॉर्निंग आर्य. Aquarius, राम. परफेक्ट. कन्वर्जन पॉइंट ऑफ द हाई वॉल्यूम, राइट? सो अगर हम यहाँ पे हाई वॉल्यूम फॉर्मेशन पे देखा जाए तो कौन सा पॉइंट ऑफ एक्शन से हम अलॉट करेंगे उसे? सो द पॉइंट ऑफ अलोकेशन विल बी टेकन इन प्रेसुवेंट ऑफ 1 आवर, करेक्ट? जब 1 आवर का प्रेसुवेंट हम देखने वाले हैं, सो 1 आवर का हाई वॉल्यूम के रेंज के हिसाब से प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाएगा, क्योंकि एक ही रेंज ऑफ मोशन से 200% से रिजेक्शन लेता हुआ दिखा था. सो 1 आवर का मेजर प्लॉटिंग यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है, right? So with this role playing action, what are the major things that needs to be taken under the consideration at the current point, right? So at this point of action, high volume formation कहाँ पे हुआ था? इस कैंडल पे हुई थी, correct? So जब इस कैंडल में high volume deployed थी, सो इस कैंडल में हाई वॉल्यूम डिप्लॉय हुआ था, रिजेक्शन लिया था, नेक्स्ट कैंडल मीटिंग फॉर्म हुई थी. सो मीटिंग का जो अलोकेटिंग पॉइंट था ये वाला था, राइट? सो दिस वाजंट टेकन अंडर द कंसिडरेशन. सो दिस first red volume and second red volume of the previous was taken under the consideration following with first come first serve. So first come first serve high volume के साथ अलॉट करते हो तो मूवमेंट एक्शन प्लान जो भी 1 आवर के हिसाब से फॉर्मेशन पे दिखता है उसे ही अलॉट करेंगे. So with this plays the role of first come first serve. 100% rejection, 100% rejection के साथ अगर notice कर रहे हो, what is the next thing? We see a break and continue. Break and continue में 200% के allotment. Sorry, 150 and 200% के allotment, right? So with this 150 of the allotment, what is the next structural plan that you will be following at this stage? The rejection. The rejection will be looked in perspective of what? High volume, break, sustainability.
सब कुछ दिखा है तो क्या करेंगे इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे? लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, डाउट नीलेश का था। Conversion, that's right. So is conversion point में what is the major thing, which is the first major point that will be taken under the consideration? Excuse me. नहीं वो भी ले सकते हो, but is that the main thing? नहीं गलत है वो। Which one? No, I'm not interested in that. तो कन्वर्जन पॉइंट है, सप्लाई कन्वर्टेड इनटू डिमांड होगा तो कौन सा वाला अलॉट करोगे आप लोग? टाइम के हिसाब से बताओ। The one with the POI range. Perfect. Right, at this point, the first come first serve is allotted in perspective of this, correct? So when this will take a role, this will act as the conversion point, no? So this will be played as supply, which is converted into demand. Sorry, मैं 15 मिनट में देख रहा था, कोई नहीं, right? Suppose the conversion is done. What is the first plan of action? There was a break and continue. When there was a break and continue, 150% is the allocating point. Allocating structure के हिसाब से conversion was exactly done through 150. With 150 setup, movement was continued in the directions. With the direction continuity, what is the major form of action of 1 hour? So this will be the plot action plan which will be taken under the consideration, right? So with this conversion point, we had got a break and continue. When there was a break and continue, intact point is pending. With the intact point, targets will be 150 and 200, right? First rejection हमारा plotting 150 से हुआ था, तो with 150% of the rejections, now we will allocate all the structures followed with 15 minutes, right? So with this point of action, what are the next major plan of actions that we'll be looking at? The major the range of motion. The range of motion matlab whenever there is a slow and steady cultivation, the plan of actions will be always with the first come first serves, right? So हमेशा यहाँ पे याद रखना एक चीज, इंटैक्ट अगर पेंडिंग है, स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, मतलब इंटैक्ट तक जरूर आएगा। विथ इंटैक्ट अगर एलजी पॉइंट और भी डेवलप हुआ है, देन वेल एंड गुड, definitely the movement is going to come down to that point. So you have to keep that in mind all the time. Okay. सर एंट्रीज भी मैप कर दो, एंट्रीज लिया ही नहीं तो मैप क्यों करो? लोगे तब मैप करेंगे ना, राइट? सो विद दिस फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑफ अलोकेटिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, राइट? यहाँ पे कन्वर्जन पॉइंट डेवलप हुआ है? नहीं हुआ है, तो येट द फॉर्मेशन विल बी फॉलोड विथ 100% डिमांड, 100% डिमांड से रिजेक्शन, रिजेक्शन से कंटिन्यूटी। कैन वी मैप दिस स्ट्रक्चर? नो, बिकॉज still taking the rejection from the point of action of 1 hour supply 150. So action plan will be same repeated at this point. With this repetition, what do we notice? We have a M2 formation. M2 formation है तो targets will be directly at
200%, right? So 200% mapping will be taken under the consideration. With 200% mapping, market took the rejection and continued the moment. So with this rejection, what do we notice at this point? Has the market completed the intact point and the LG? No, not yet. So what is the first plan of action that we'll be working out? We'll be allocating a structure of a surplus, right? Surplus कहाँ से लोगे? Surplus action plan will be taken under the consideration from the starting point till to the last rejection point. The last rejection point was at 150. So this will be my surplus mapping, which will be taken under the consideration for allocating. सरप्लस में अगर मिनिमलिटी फॉर्म होती है, क्या हम डायरेक्टली 150 200 तक जा सकते हैं? जल्दी बताओ. नहीं, करेक्ट. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट टारगेट्स अगर सरप्लस को हम अलॉट कर रहे हैं तो रिजेक्शन के साथ? द रिजेक्शन के साथ जब अलॉटमेंट होती है, द फर्स्ट एक्शन प्लान इज ऑलवेज टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ 100%. 100% ब्रेक जब होता है तब हम जाके 150 एंड 200 मैप करते हैं. मिनिमलिटी M1 M2 होता है. अगर M2 आता है तो डायरेक्टली क्या हम 200% मैप कर सकते हैं? नहीं, 150 एंड 200 दोनों. करेक्ट, राइट. सो उस फॉर्मेशन के साथ ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन अलोकेटिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ ही बने रहेंगे, right? So with this continuity of the movement action plan, market 150 में sustain हुआ था, 200% तक आया नहीं, and market clear cutly indicated the portion movement plan. What is portion movement plan? जब भी एक volume development में formation दिखाती है, first market हमेशा एक चीज follow करती है, वो है volume, right? Because Friday का PM session था यहाँ पे. So what is the one redevelopmental act that you will be following? That is, do we have any range of motions which is taken under the considerations through the preservance? So the preservance point of action start karte hai with completion of this. That will be the new topic what we'll be working on today. Right? Because mapping nahi hua hai, so I'll explain it out. It will be easier for you guys. Right? So at this point of action, Friday ka New York PM session will be taken under the consideration with the first plot. Plot 1 action plan will be allotted in circumstances to the second. Break and continue. Break and continue जब form हुआ है. What is the one major thing? 150 and 200% will be the next targets. Right? So 200% completion. With 200% completion, what did market tend to showcase? Market tend to showcase a movement drop. जब market movement drop दिखाता है, कहाँ तक दिखाता है? First intact point, second LG point. अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, what is the one major thing that market has followed at this current stage? Intact point, then the LG point. Perfect. Right. So what is the demand mapping that will be worked at till the LG point? First come, first serve of the demand. So the same demand will be taken under the consideration with the plan of action of reallocation. यहाँ पे हम कन्वर्जन मैप कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारा मूवमेंट एक्शन प्लान का कन्वर्जन ऑलरेडी 1 आवर पे यहाँ पे हो चुका है, right? So henceforth the conversion will be not taken at this point. We'll be taking an allocation of a demand. जब demand allocation होता है तो probable outcomes will be always in showcased with the previous point of movement. Previous point of movement is always in accordance to the plan of action which is in the current plotting, right? जब current plotting के हिसाब से अगर हम देख continue in the retracement, 150% was exactly matching with the double confirmation of the intact and LG point. Market tend to take the retracement and carry forward at the movement.
right? With the carry forward of the movement, what is the first come first serve that we are having? This is the first come first serve of the Friday PM session. The location of the structures will be taken at the point. What do we notice? M1 formation. M1 formation targets will be 150 at the most with the volumes in configure. Right? So with this volume action plan, market tend to take the rejections from 150%. With 150%, market allocated a structure with followed through the diversions. The diversions were taken in pursuance of the first come first serve of the demand action plan. The first come first serve of the demand action plan was followed with the movement which has been reallocated in the structure, right? When the structure was reallocated, the movement was taken in considerated of break and continue. With break and continue, the movement tend to move till 150%. नोटिस कर रहे हो इंटैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, इंटैक्ट भी कंप्लीट followed through, there was a volume break change. Volume break change मतलब जब भी एक considerative plan of action develop होता है, market always tend to move in the opposite directions of the current directions. Matlab, that is the indication of the action plan which has been showcased through the 1 hour motive, which will give you a present action plan through the conversion of the previous. Right? जब previous action plan को lineup में लेते हैं, what are the first things that we'll be looking for? We will check out on the volume perspectives. In 1 hour, New York PM session closing से पहले क्या indication दिया था? Right? So on the indication perspective, market had clearly indicated an intact point version which was in pursuance of this lane. First high volume, second high volume indication, third high volume indication, continuity में थी market in the entire point. Right? उसी सिनेरियो के साथ आज के दिन में अगर नोटिस करोगे, first high volume was created in this candle of the movement wherein the development was formed. I am not taking in consideration of Sunday. A candle में high volume form हुआ, right? So wherein I am not interested at the current state towards short because वो movement हो चुकी है and ऊपर की तरफ अगर notice कर रहे हो 1 hour में ही wick नहीं है, तो definitely market is going to create the wick for it, right? So अगर setup form होता है तब मैं interested रहूंगा short की तरफ देखने के लिए, उससे पहले नहीं, right? So in that pursuance, so this movement is currently towards the short which was being planned out with. तो आज के दिन का शुरुआत यहाँ से होता है संडे का मूवमेंट के थ्रू विद द संडे मूवमेंट what are the one major things that needs to be taken under the consideration? Reallocating the structures. Structure को reallocate कब करोगे? जब formulation development में आता है, right? When the formulation is in the development, the first action plan is always through the previous plan motto. The previous plan motto will be taken under the consideration of the closures last 2 hours. Friday का जो last 2 hour का closure होता है, वही point of action का movement के through development दिखने को मिलती है. Right? So with this development, this is the plan of action which had to be followed in the previous Thursday and Friday. Right? शुरू करने से पहले I'll just map it out. Apologies. कोई भी डाउट से पूछते रहो मैपिंग करने पर.
Sir, if you had to choose one entry that is either to the LG or an intact or from intact, which one could you choose? I could choose the entry where the market, as a beginner, if I had wanted to choose, I will choose from S to B1 only, from intact. Because LG creates at a very rare scenarios on 10 opportunities, you will get 6 opportunities. But intact is like if 10 intact is created, you get 10 entry in that plan. Okay, Arya. Morning, Aquarius. Ram Ram. आपने 30 मिनट में एक्सप्लेनेशन नहीं, मैपिंग अभी खत्म नहीं हुआ, आज के दिन का है ना। राइट, सब हो गया वहाँ पे। नो सर, 100%। गुड वन सर। आप सरप्लस के लिए बोले थे ना, 100%। All the mappings done. Perfect. Okay, let's start for today's live analysis for execution of the trades. At the current point, मेरा major plan of action होगा from the previous PM sessions, which will be taken under the considerations with allocating of screening. राइट, तो अगर आज के दिन में ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान आउट करना है, तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट डू वी नोटिस? डेफिनेटली दिस कैंडल यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बिकॉज दिस इज अ 3 AM कैंडल, आप लोग उठते ही 5 के ऊपर हो, तो दिस candle will be not taken under the consideration, but yet mapping will be starting at this point itself, right? So what is the conclusive action plan which will be taken under the consideration at this point? The first action plan will be formed through this range of motion as the first come first serve, which will be taken under the mapping point of the receiving, क्योंकि अगर फ्राइडे का क्लोजर फॉर्म वहां पे हुआ है, तो अलोकेटिंग पॉइंट भी वही होगा एट द स्टार्ट, right? So with the start point of action, what do we notice?
we had a minimality M1 formed. With the minimality M1 formed, the break and continue with the high volume. With the high volume break, market was sustained with the same high level of range of motion. अगर same level of high range of motion develop हुआ है, तो 150 and 200% will be the accurate positioning to allocate the structure. Right, so this was exactly matching with our intact point of the previous Friday movement, but yet market tend to break and continue at this point. So what is the one major thing that will be following at this current scenario? The current scenariotical movement will be placed in pursuance of the previous. How? The mapping of 1 hour gave you the confirmation that the bearish movement is going to occur till this point. With this point of movement, 15 minutes allocations will take place, right? So when the confirmation is towards the short with the formation, the first allocating structures will be at every retracement point, right? मतलब सरप्लस मैपिंग हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1 आवर का अलोकेशन तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, करेक्ट? जब 1 आवर का अलोकेशन हाई वॉल्यूम के साथ डेवलपमेंट में दिख रहा है, सो व्हाट इज द फर्स्ट रेंज दैट विल बी लुकिंग फॉर? The first allocating point of action plan, right? The first allocating point of action plan कहाँ से identify होगा? Through the movement of the current directional range of single retracement. मतलब जहां पे भी मार्केट में सिंगल रिट्रेसमेंट फॉर्म दिखने को मिलेगी, वहां से ही डेवलपमेंटल ड्रॉप दिखने को मिलेगा. सो इन दैट परसुवेंस यही हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन है, जो कि अलॉटमेंट में अलॉट होगा, right? So when this will act as your first come first serve demand, because you have 1 hour confirmation over here that the market intact of 1 hour is till this point. जब ये पॉइंट ऑफ एक्शन डेवलपमेंट में दिखने को मिलती है, सो सेम रेंज ऑफ मोशन के साथ पोस्ट रिट्रेसमेंट, राइट? पोस्ट रिट्रेसमेंट मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो भी रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा, उसी के साथ अलॉटमेंट हम देखने को मिलेगा, right? So this is the retracement what we had at this point. With this retracement, market tend to continue from the rejection of 100%. So allocation of the first come first serve will be taken at this point. So with this point of action, what do we notice? With this range of motion, we have a M1 formation in 15 minutes. When the M1 formation is there, what do we tend to do? We tend to map out first come first serve of minimality 150%. राइट, क्योंकि 15 मिनट का अलोकेशन है, सरप्लस नहीं, राइट? 1 आवर में सेम अलोकेशन देखते तो सिनेरियो अलग होती, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन वी हैड मैप्ड 150% of the minimality. With the minimality formation, market to take the rejection with the same spotting. What is same spotting? Same spotting of the range of motions of the volume change track. वॉल्यूम में चेंज ऑफ ड्राफ्ट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मार्केट हैजंट कंप्लीटेड द इंटैक्ट एंड सॉरी मार्केट हैजंट कंप्लीटेड द एलजी लिक्विडिटी ग्राफ एंड डाइल्यूशनल लिक्विडिटी इज पेंडिंग येट इन द रेंज ऑफ मोशन, राइट? जब फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन इजंट कंप्लीटेड, व्हाट इज द अलोकेशन? रिजेक्शन पॉइंट से जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रिट्रेसमेंट फॉर्म आउट होगा, उसी को हम अलोकेशन के साथ रीवैप करके चलेंगे, right? So with the revamp style, what do we notice? Market has created M2 formation. With M2 formation, break and continue. The market has taken the rejection from 150 at the current stage, 200% complete karega. Then the formation will take a small retracement and continue towards the long side. Reason of there should be one more retracement because each point of action पे और एक liquidity pending है, dilutional one. So once that dilutional liquidity is taken under the play, the formation will continue on completion of this point, not prior to that. For this, the movement range of action plan, क्या आप यहाँ पे हर एक point of range को मैप करके चलोगे? नहीं, क्योंकि हर एक point of range को मैप करके चलोगे, you will be confused. Let market first complete the nearest minimality range of motion. उस range of motion को complete करने के बाद next formation हमको दिखने को मिलेगी, क्योंकि एट द करेंट स्टेज जो कि रिजेक्शन हमको दिखने को मिल रहा है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटैक्ट है, जो यहाँ पे इंटैक्ट क्रिएट किया है ना, उसका रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है, बट मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है एंड यहाँ पे है,
राइट? वो फॉर्मेशन जब कंप्लीट करेगा तभी ही नेक्स्ट प्लान को हम अलॉट करके चलेंगे, उसके साथ ही बने रहना। होप देयर इज नो कंफ्यूजन्स इन द करंट मोमेंट। हर एक सेटअप के साथ एड ऑन्स देखेंगे, प्लॉटिंग के साथ मूवमेंट 78 मतलब 750 पिप्स का ही ड्रॉप दिया है। ऑन कैरी फॉरवर्ड वी विल good movement to be captured because today is Monday. Definitely movements to milne wale. So there is one more LG point here. I forgot to map that. Any doubts in gold, guys? Sir, but what about volume? We just checked, no? And re-explain the volume of today. Okay, Nathan. Good morning, Shreyas. अभी सेटअप बना है सर। जी अभी ट्रेड करने से अच्छा है 40 मिनट शांत बैठ जाओ, लंदन सेशन को फर्स्ट हाई वॉल्यूम कैंडल कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन दे। एशियन सेशन का मूवमेंट आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो, ठीक है?
ओके श्रेयस। कोई भी डाउट है पूछ लो, स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। Can we allot a structure which has been based? Can we allot a structure which has been based of first come first served demands in the current scenario? Yes, you can drop it. So mapping plan कैसा होगा? 1 2 1, right? 1 2 1. ये वाला मैपिंग सिनेरियो के हिसाब से अलॉटमेंट्स देखा सकता है। ये बिगिनर्स के लिए ही है, ठीक है? Sir, in my earlier question, let's say there is an intact pending. So, with the right setup, should I execute forward? Should I execute towards the intact if I can see the price going for it? Or should I wait for a price? Or should I wait for a price to intact and then execute with the setup? See, हमेशा एक चीज याद रखना, अरे, right? So formation allotment कैसा देखा जा सकता है? Allotment एक structure होती है, right? First you have to get that hold on S to B1, 1 2 3, right? अगर ये आप इंटैक्ट होने के बाद 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड पकड़ रहे हो, then you can come to the intact candle direct execution 1। जब यहाँ पे इंटैक्ट होता है ड्रॉप लेने के बाद, जब रिवर्स पॉइंट ऑफ मोशन पे सिंगल रिजेक्शन दिखा के सेकंड कैंडल मूवमेंट आती है ना, वहां पे एग्जीक्यूशन। दिस कैन बी डन ओनली व्हेन
when the formation is looked in perspective of more than 7 entries in 10 trades with S2B1 post intact points, right? मान के चलो at this point of action यहाँ पे अगर notice कर रहे हो यहाँ पे intact complete नहीं हुआ है, आप यहाँ पे execution देख रहे हो, right? आप setup के साथ ही देख सकते हो, intact के साथ नहीं, right? अभी इस point of action में A range में भी rejection है, राइट? ये रिजेक्शन आप तभी ले सकते हो जब एक फॉर्मेशनल एक्सपीरियंस हो, राइट? कीपिंग इन माइंड ये मूवमेंट एक्शन प्लान इंटैक्ट कंप्लीट करने के बाद 350 पिप्स की है, राइट? नो डाउट, बट इट्स अ सिंगल कैंडल मूवमेंट। वो माइंड प्रेशर डेवलप करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल कैंडल की मूवमेंट का अलोकेशन फॉर्मेशन से बहुत प्रेशर डेवलप करती है टू द माइंड, राइट? henceforth फर्स्ट सेटअप एग्जीक्यूशंस देखो, जैसे कि यहाँ पे, राइट, मार्केट मूवमेंट फॉर्म हुआ, राइट? मूवमेंट फॉर्म होने के बाद एलजी क्रिएट किया, इंटैक्ट क्रिएट किया, वापस आई, आपने डिमांड मैप किया, रिजेक्शन पॉइंट डेवलपमेंट दिखाया, जैसे ही पॉइंट ऑफ एक्शन से एग्जीक्यूशन मिलता है सेटअप के थ्रू, यू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशंस, राइट? लाइक इन फॉर्मेशन ऑफ जहां पे सेटअप फॉर्म हो रही है वहीं पे एग्जीक्यूशन देखना, राइट? एट द स्टार्ट अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, दिस इज योर इंटैक्ट पॉइंट, हाँ जी, दिस इज योर इंटैक्ट पॉइंट, दिस इज योर एलजी मूवमेंट, करेक्ट? यहाँ पे अगर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन देखने के लिए सेटअप है, नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे करोगे, डेफिनेटली फर्स्ट यू विल टेंड टू गिव द एसएल, देन द मार्केट विल गो इन योर डायरेक्शन ओनली, राइट? बिकॉज अगर यहाँ पे इधर ही देख रहोगे तो यहाँ पे और एक है जो कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन पर, right? So observation and pursuance is the most important thing for an intact execution. मतलब S2B1 intact trades जो होता है उसमें observation बहुत जरूरी है पेशेंस के साथ, राइट? अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जहां पे भी सेटअप फॉर्म होती है उस सेटअप के साथ एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आप बने रख सकते हो, ठीक है? Alright, thanks. God said thanks. You're welcome. New 1 hour candle in next 8 minutes. Post that we'll wait for 30 minutes. लंदन सेशन का मूवमेंट जैसे ही फॉर्म आउट होता है उसके साथ एग्जीक्यूशन देखेंगे, ठीक है? किसी को भी कोई और डाउट्स? कलर which color do you choose? Hmm.
Sir, your entry has always been very precise and perfect, almost at the start of the week with the intact formation. How do you make sure that the specific intacts get respected and not invalidated? Many mapping points cleared, sir. Thank you very much. Yes, thank you so much, Surajji. Sir, your entry has always been precise and perfect, almost at the start of the week. Which intact formation? How do you make sure that respects? How do you make sure that the specific intact gets respected and not invalidated? Rule is simple, ना रितेश. देख, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे इंटैक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है? समझ, ये एक इंटैक्ट पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है। अगर वॉल्यूम आइसबर्ग जोन में है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर आएगा, इस इंटैक्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस इंटैक्ट पॉइंट के साथ मूवमेंट फॉर्मेशन पे कंटिन्यूटी पे आएगी, करेक्ट? सो ये वैलिडेशन शॉर्ट के लिए तभी बनेगा जब मार्केट में वॉल्यूम आइसबर्ग जोन में है, ओके? सिमिलर वे में सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे एक मार्केट ड्रॉप दिया, ओके? यहाँ पे सेम इंटैक्ट जोन है, राइट? अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे आने के बाद अगर मार्केट में आइसबर्ग जोन नहीं है, राइट? सो मार्केट में यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, तो समझ जाओ ये वाला इंटैक्ट कभी उसको रेस्पेक्ट करेगा नहीं, राइट? आपको रिजेक्शन डेफिनेटली दिखाएगा, यहाँ पे आके एक छोटा सा रिजेक्शन दिखाएगा, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में फॉर्मेशन इतना बड़ा आएगा कि आपका एसएल वन शॉट में लेगा, राइट? सो हमेशा 1 आवर की वॉल्यूम को साथ में लेके चलो, तभी ही आपको वो एग्जीक्यूशन पॉइंट इंटरेस्ट देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? सो एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन क्या आप ये वाला इंटैक्ट से शॉर्ट करोगे? नहीं, आप वेट करोगे। क्यों? हाई वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, हाई वॉल्यूम फॉर्म होने के बाद सेटअप तो डेफिनेटली फॉर्म करेगा ही, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आएगा, क्योंकि वन बिग मूव ऑलवेज क्रिएट्स अ डाइल्यूशनल लिक्विडिटी। यहाँ पे जब आने के बाद जो नियरेस्ट एलजी पॉइंट या इंटैक्ट पॉइंट जो होता है, उस इंटैक्ट पॉइंट में एग्जीक्यूशन हम फॉर्म आउट लेंगे लॉन्ग के तरफ, ओके? द रीजन इज वी हैड अ हाई वॉल्यूम हियर, बट यहाँ पे हाई वॉल्यूम नहीं था तो इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे हाई वॉल्यूम था तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो दैट्स द ओनली थिंग, हाई वॉल्यूम को साथ में लेके चलो, यू विल हैव मोर एक्यूरेट ट्रेड्स, ठीक है? नाइस क्वेश्चन रितेश, आई हैव आल्सो सेम डाउट्स एज रितेश डाउट्स। तो पहले क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? क्लियर है? वॉल्यूम को साथ में लेके जाओ। प्रिसाइज एंट्रीज के बारे में अगर पूछ रहे हो तो उसके ऊपर एक दिन करेंगे बात।
100% अलोकेशन कंप्लीट करने दो इसको पहला न्यू 1 आवर का वन नया कैंडल है ये how will this mapping work first plotting which will get allocated in structure of this ठीक है सेकंड फॉर्मेशन एडवांस लेवल पे अगर मैपिंग लेना है ये वाला डायरेक्ट मैपिंग पॉइंट यहाँ पे होगा ओके सो एक में 100% कंप्लीट हुआ है यहाँ पे henceforth the direct allocation will be through N1 150 completion यहाँ तक दिखने को मिलना चाहिए कैसा आना चाहिए ये कैंडल इधर से रिजेक्शन लेने दो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके यहाँ आने दो यहाँ पे सेटअप फॉर्म होना है तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा लॉन्ग के लिए टू कंप्लीट दिस एलजी ओके स्मिथ ऑन यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा अगर यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है 90% ये फेल होने की चांसेस बहुत रहेगी henceforth तो फोमो में मत आना आने दो नीचे all the beginners whichever strategy whichever rules whichever competent formulations you guys are following make sure to back test it for 6 months forward test it for 6 months 1 month of live analysis come with a smaller capital with the smaller capital compounded following it with a proper risk to reward remove fear greed and fomo while executing the trades with that make sure to learn before you earn. Don't give your hard earned money to manhandle nor follow any tips because it's your hard earned money. So learn first. One good trade is a trade executed with your mindset, your analysis, your precisions, your patience of holding. Winnings will give you happiness, losses will give you learnings. Don't repeat the same losses more than 3 times. Followed with a right precautions of compounding, you will sustain in this business. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम पे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय